this is the way it's going to be for some time, लेकिन geographical boundaries बड़ी पार हो जाती हैं. एक जगह पर सचेत परंपरा, एक जगह पे तुलसी और एक जगह पर मैं. Thank you guys for joining me. Thank you for having us, Salil. It's such a pleasure being with you always. But listen, first of all, congratulations, pura rock star. I love the song. Tanhaai is rocking. Thank you so much. You know, a lot of the times, Sachet-Parampara for making it like the way it is. It's the rockstar who took it to next level. Yeah. It was totally her idea. कि मेरे को फुल आशिकी वाली फील आ रही थी इस गाने के साथ, जैसे तुम स्टेज पर थी, जिस तरह तुमने गाया. गिटारिंग वाज सच अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉन्ग. जब भी स्टेज पर कोई जाता है ना, अगर आप म्यूजिक, जैसे कि ऑब्वियसली सचेत परंपरा, थॉट ऑफ दैट, इफ यू डोंट हैव अ गुड गिटारिंग पीस ना, तो वो फील ही नहीं आती स्टेज पर. तो आई थिंक बिफोर आई कम टू तुलसी, ये तुम लोग ने ऑब्वियसली व्हेन यू आर हैविंग हर ऑन स्टेज, द होल कॉन्सेप्ट वाज वेरी नाइस, but the guitaring piece was very nicely done, and I know you all have done live versions also with it. तो इसके बारे में just tell me the composition. How did you think about it? Actually, it all started with Tulsi ji. उनका जब Sachet, since when are you calling me Tulsi? जी ये क्या हो गया? अरे Sorry to आपका cut you सॉन्ग there. बहुत कमाल का हो गया ना, तो थोड़ा और ज्यादा. Keep quiet. तो तुलसी जी ने जो शुरुआत जो की, उसको जो हाँ, आगे जो बढ़ाई बात बताना मेरे को. कह रहे हो? आपने कॉल किया था, उसके बाद से इनका थॉट था कि इट वाज टोटली हर आइडिया, हर परसेप्शन, एंड कि इसको ऐसे लेकर जाना है. मेरे दिमाग में ऐसी सोच है. और जब पता है क्या सलिल भाई, आई टेल यू ऑनेस्टली, जब तक हम लोग को, आप जानते ही हैं, वो जब तक पॉजिटिव एक वाइब्रेशन सामने वाला नहीं फेंक पाता है, तो हम लोग वोंट बी लाइक, कुछ कहते हैं ना, वो हम लोग भी थोड़े बैक सीट पे ही रहेंगे. हाँ, हमें लग रहा है आई थिंक इंटरेस्टेड कोई होता नहीं है, तो ऐसा वाला फील. बट आई थिंक जिस तरीके से वो लेकर गई हैं आगे, She was on the driving seat basically. She drove all of us, music team, and उसके बाद फिर स्नेहा शेट्टी, उन्होंने इतना brilliant वीडियो डायरेक्ट किया. So I think वो वहां से शुरू हुआ. एंड वहीं से ही, मतलब वो जो आप गिटार की बात कर रहे हैं, एक सेशन आई थिंक हमारा, जब कैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि जब म्यूजिक डायरेक्टर्स और आपके सिंगर्स का बीच में और लिरिसिस्ट, आप सबका मतलब एक सीट पे नहीं होंगे तो फिर मजा नहीं आता था. ये लोग बैठ के काम करते. आई थिंक इस प्रोसेस, ये वाला ना, ये प्रोजेक्ट, इट्स लाइक द सेम वे जो हमारा 20-25 साल. ट्रेडिशनल एक तरीका. वाह. And I have to add some things for Tulsi also. Brilliant toned stomach also, Tulsi. Wow, fantastic. इसमें बहुत काम हुआ है. जो लॉकडाउन में बैठा है ना, अपने टोन्ड का तोंद हो गया है. You know, I realized this part. Secondly, Absolutely नहीं, मैंने काम किया है सलिल, because you know I thought that अगर इस टाइप का गाना करना है, and क्योंकि मेरा विजन था कि मुझे जो नेक्स्ट सिंगल करना था, I was doing a lot of collaborations. इससे पहले भी मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक किया है, पर ये एब्सोल्यूट एक सिंगल, मतलब सोलो मेरी वोकल का गाना था, and I wanted to do something very different from what I've done before. So I think, you know what I liked about this, Tulsi, was there was a lot of power in this song also. You know, and you have a strong voice. Sometimes in the last, say, 1 or 2 years, or maybe even longer than that, you've got into a very different kind of romantic zone. You know, whether it was a Kabir Singh also, और अलग zone में चले गए थे आप. those are the kind of songs that were coming to me, and mostly we were doing film songs. So वहाँ पे what you know, the different side of you can't be explored, because you know in films you're always typecast into one category के अच्छा romantic गाना है, sweet voice है, we'll keep it on a higher scale. Or obviously when any singer, any female singer sings in a higher octave, you tend to sound much more sweeter and more like a thinner voice. But here with independent music we have that freedom to kind of experiment with our tone and the genre of music. तो आई थिंक ये जो एक पॉप रॉक स्पेस का गाना सचेत परंपरा ने बनाया, एंड द वे दे गाइडेड मी, बिकॉज आई रिमेम्बर सचेत ने एक बार मुझे एक ही ब्रीफ दिया था कि एकदम सारे वोकल्स फेंक के गाने. सो आई कॉट ऑन टू दैट, और मेरे को याद है मैं सचेत और परंपरा को वॉइस नोट करती थी कि एग्जैक्टली क्या करना है. यू नो, दे यूज्ड टू गाइड मी इन अ वेरी राइट मैनर, बिकॉज इस टाइप का मैंने पहले किया नहीं है. Also, I've not experimented much in this key and this kind of a tone. No, it's very impressive, and not just impressive with the singing, even the body language on the song. You know, a lot of the times, I think before the song, you know, I remember when the first teaser came when I was watching it,
I like the scale that it was shot at, you know, the way it looked. क्योंकि कई बार क्या होता है आजकल, you know, you can shoot something in a very good quality but in a small box. क्योंकि कोरोना चल रहा है तो एक box type videos बहुत बन रहे हैं जो, you know, that are very quirky. But this was very good because you're otherwise not such a loud person, you know. Because from the Tulsi I've known for so many years, you're a reserved kind of person, and this was a break in personality also for you, and it didn't look fake. So kudos to you for that. Yeah, that was very, very important to do. लास्ट टाइम भी जब हम लोग मिले थे तो हमने बताया भी था आपको कि इनका वॉक ना, तो वो जो एंटर करते हैं ना आप जैसे ही, Well, You know, the bouncers are there and she's walking onto the stage. एक आर्टिस्ट जब उस स्टेज पर आ जाता है ना कि वो सच में टूटा हुआ है ना, और मतलब उसका हार्ट ब्रेक हुआ है, उसने ऐसा फील किया है ना, अगेन शी वांट टू किक इट बैक, एंड वो वैसा दिखता है एटीट्यूड. you know, another reason why सब कुछ बहुत realistic लग रहा है, and yeah, people know me more as a demure, reserved kind of a girl, but I don't know why, you know, I've always been like the way I am in Tanhaai, but it's just that the kind of work that I've done, it's not done justice for me to kind of come out in that way. But somewhere or the other, I think with Tanhaai, since also the entire video was conceptualized in my head, जो मैं स्नेहा के पास लेके गई, and she really liked the whole concept. So I think I could do justice to it because I related a lot to that character and that entire vibe. And of course मुझे पता था कि एक rockstar vibe carry करने के लिए I'll have to learn the guitar. I didn't know how to play the guitar, so I started training. I did my guitar sessions. हालांकि 6-7 classes ही लिए मैंने, but मैंने वो particular piece सलिल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो मैंने खुद personally play करना सीखा, उसके पूरे chords उठाए, because holding a guitar in the music video and not being able to do justice to it would look 1980s Bollywood, 1980s में ऐसे होता था ना, जैसे ऐसे 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 करते रहते थे, यही होता था बॉलीवुड. मतलब कुछ भी वो. No, but as a musician also, I think I wanted to connect with this song even more, and picking up the instrument helped me, and justification of the character in the video, I mean, because it was all cooking in my head, so exactly knew, and उसके लिए मुझे पतले भी होना था, टोन्ड भी दिखना था. भाई आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. वो उसके बारे में और बात करेंगे, बट यू नो सचेत, आई थिंक द गिटार इज द मोस्ट, लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू कि पियानो शायद है या गिटार, इन दोनों में विच इज द मोस्ट कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट फॉर अ म्यूजिशियन टू मेक अ सॉन्ग? इज इट अ पियानो, इज इट अ गिटार? बिकॉज बहुत सारे लोग, जब मैंने बचपन में गिटार उठाया था, a lot of people said कि इसी के साथ सब कुछ हो जाता है, but is it a piano also? No, I think guitar is a complete instrument because guitar के पास ना दो चीज है, one is melody and one is rhythm. पियानो के पास मतलब आपको मेलेडी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आप रिदम प्रॉपर दे नहीं पाओ, तो आप. But do you think it's important? A lot of singers, they need instruments in their life. जैसे singers बोलते हैं ना, बचपन में हमें बताया जाता था जब हम म्यूजिक क्लास के लिए आते थे, that if you have to become a singer, you should pick up an instrument also, and it should not be drums. तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको उठाना चाहिए ताकि, हाँ, बिकॉज ड्रम्स में तो अलग हो जाएगा. सो डू यू थिंक दैट फॉर एस्पायरिंग सिंगर्स एक म्यूजिशियन हेल्प कर जाता है? I'll ask both of you first, Sachet-Parampara and then Tulsi, that it really helps singers to have an instrument? Of course, इंस्ट्रूमेंट आपको मतलब आई कांट प्ले ड्रम्स, बट ये है कि हम लोग का मेलोडी सेक्शन आई थिंक जितने होंगे हम लोग प्ले कर लेते हैं. We both play melodica and then mouth organ she plays. So there's a lot of instrument, guitars, keyboards, और जो हम लोग कर सकते हैं. Basically, you're able to understand more dimensions of music via instruments. One is the singing, one is whatever you're singing, composing. But when you're on a guitar, of course, the chord structures, the theory, the notes, it helps you, and it makes you an overall musician and learning an instrument. Tulsi, do you agree? I absolutely agree. और यहाँ मैं थोड़ी मार खाती हूँ क्योंकि मैंने हमेशा vocals पे ज्यादा ध्यान दिया. That's why I asked this question. I used to do रियाज on the harmonium and the tanpura. तो उसके अलावा मैंने कोई ज्यादा इंस्ट्रूमेंट सीखे नहीं, and I feel very dependent sometimes as an artist. I now want to pick up the guitar and walk on the stage and at least play the chords of my thing, because you become very independent and you can do a lot more with your own song. Like you can, you know, when you're playing an instrument live and singing, the whole vibe changes, and you can improvise also. So much you can do when you have that. Live shows में तो खैर सब कुछ ही change हो जाता है. If you have an instrument with you on stage, I think that really just changes. If you haven't seen Tanhaai already, I mean,
I don't get impressed very easily with music videos because they're very similar in nature and some of them follow similar storylines or they have a dance storyline. I honestly did not think that Tulsi would pull this off. She looks so convincing. And you know, I'm huge fans of Sachet-Parampara, obviously, as far as music is concerned, but the three of them together has been fantastic. We can take a little break and come right back. Don't go anywhere. You're back on Star Stop with me, and well, something new always in the lockdown. You get to see the challenges that are faced in trying to make something look beyond a chota sa screen. You know, even when we try and do an interview here, I'm so happy कि तीन अलग locations से हो रहा है. Sachet Parampara in Bombay and Tulsi in Delhi. Thank you so much for joining us here. नहीं, मैं भी बॉम्बे में ही हूँ. अच्छा, आप बॉम्बे में वापस आ गए? या, sorry. अलग लोकेशंस पर. पता चले नेक्स्ट स्टोरी लगा रही हूँ बॉम्बे की. सलिल बोलेगा मुझे झूठ बोल रहे थे. फाइनल प्रोडक्ट देख लिया तुलसी. यू गॉट दिस इन योर हेड. सर से लेकर एक्चुअल विजन जो रियलिटी में आना फ्रॉम द क्राउड. अच्छा, क्राउड भी फेक नहीं लग रहा था. ये भी मैंने सोचा, मैं बारीकी से देख रहा था. जो पहले 4 लोग ऐसे ऊपर कूदते हैं, एक्चुअली 40 लोग बैठे होंगे वहां पे. मतलब यू नो, सो ऑल दीज थिंग्स स्पेशली इन लॉकडाउन. नजरों से कुछ छुप नहीं सकता. सलिल को कोई टेक्निकलिटी या कोई भी चीज सब कुछ पता है ऑब्वियसली. नहीं, लकीर के फकीर होते हैं आजकल बहुत सारे लोग, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. यू ऑल जस्ट, it almost looked like, you know, you all thought of the fact that people are going to get out of lockdown. Now you can't shoot like lockdown wise all the time. So when you first time you saw it, you must have been really impressed with yourself also and the video also, na? Yeah, I was really impressed with the way Sneha has delivered the final product because, you know, मैंने एक concept put forward किया था and then she took it to another level and gave it her finesse. So definitely huge shout out to Sneha Shetty Kohli for like directing it like the way I visualize it, like even better than what I visualized. Of course. Now let's talk about the biggest pain for artists like all three of you all, yaar. You all must be really missing the stage, na? ये लॉकडाउन का सफर कैसा रहा है यार? तो मेरे वीडियो में वो कॉन्सेप्ट था. मेरे को स्टेज बहुत मिस कर रही थी पूरे साल से. तो मैंने कहा अरे कुछ तो करो, वापस स्टेज पे कैसे तो चढ़ो. तो ये गाने में वो पूरा स्टेज सीक्वेंस एक नहीं, आई थिंक 1 2 3 4 डिफरेंट स्टेज सीक्वेंस है. However, one is the most highlighted one, but she sings on an auditorium stage. Your costume जो आपने white वाला पहना है, it's just so beautiful. तो आंखों में आंसू आए क्या? अच्छा, वो सचेत परंपरा there during the shooting, मतलब did you see the stage? उस समय आंसू आए आंखों में? अरे 1 साल से नहीं देखा. Stage वाला नहीं, they came the next day when we were shooting the next day. Stage वाला मिस हो गया था. But you know na Salil, in a shoot there's so much mad rush happening from one location. You can hardly feel anything कि चल क्या रहा है. वो बाद में when the whole product comes together, you get the whole vibe of the entire. Do you think that performances will now change also a lot? मैंने notice कर लिया almost बहुत सारे लोगों ने ये कोरोना as a essential part of everything डलवा दिया. You know, one of my friends I know recently just moving to Dubai to do a show right now. But otherwise I realized that will musicians have to change the way they entertain people also? I mean, we're all doing virtual events. वो जहाँ हैं जो digitally change हो जाता है. I spoke to Nikhil Chinappa, also my very close friend, as a DJ. He said, I hope it doesn't. He says because a Tomorrowland आप जब वहाँ देखने जाते हो, वो feel ही अलग है. वो कभी भी वैसी same नहीं हो पाएगी digitally. But do you think that this is going to be a part of your lives for another 2-3 years जहाँ digital/real shows रहेंगे ही रहेंगे? सचेत परंपरा. नहीं, digital नहीं चाहिए. We wish it, you know, मुझे चाहिए ही नहीं. कुछ भी हो जाए, जो है आप स्टेज पे ही जाओ. भले ही कुछ हो जाए तो भगवान करे कुछ ना हो, लेकिन आपको मतलब मुझे स्टेज का एक, जब तक आप क्राउड से इंटरैक्ट नहीं करते, आप उनको देखते नहीं हो, you feel very empty, यार. I mean, on a video, no connection. नो कनेक्शन. आज भी जैसे अगर हम आपके सामने हैं यहाँ पर, तो हम लोग मतलब नो डाउट आपसे बात कर रहे हैं तो एक आ जा रहा है, बट जब सामने होता है तो इंसान और ज्यादा एक कहते हैं ना, एक जज्बा और आता है, एक जुनून आता है, एक मस्ती आती है, तो वो सब कुछ मिस करते हैं. But मैं कई बार I'm hoping that this doesn't become an actual way of life. Tulsi, do you think that it could? Because अभी भी जैसे कि आप थिएटर तो खोल दोगे, लेकिन लोगों का डर जा नहीं रहा है. हाँ, कुछ दबंग खिलाड़ी हैं, लेकिन the people that we want to come for a show, वो decide करते हैं अपने लाइफ में, is this essential for me? I really feel that the next 1 or 2 years
will be very difficult for all of us in the entertainment world. I know we're just hoping for the best, but as Sachet-Parampara said, वो vibe कभी phone screen या laptop screen पे, you know, especially for a performer, when you're performing, you need that energy from your audience. That needs to come to you for you to give it back to them, you know, while you're on stage. तो वो एक जो relation होता है while you're up there on stage and your audience is connected to you and they're singing along with you, वो power और वो energy बहुत miss कर रहे हैं. And we're just hoping, अभी पता नहीं, you know, how will things, but I've already heard that a lot of shows and a lot of things are bouncing back slowly. And करेक्ट, दुबई में हो रहे हैं ना, बट द क्वेश्चन इज नाउ कि सबका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए वापस आके. जा तो रहे सब लोग. They should all be negative. they're so fed up of staying indoors and everybody's like, अरे जो होगा देखा जाएगा, now let's just step out. That's happening. करेक्ट, यही हो रहा है आजकल. लोग अब यही सोचा होगा, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाहर तो निकले, ऐसे तो घुटन. जिस दिन होगा ना, जिस दिन होगा ना, तो ये डायलॉग बंद हो जाएगा, क्योंकि इस बात को याद रखना सर. आपको भी जाना है, शुभ शुभ बोलिए. अरे माते, हाँ हम जाएंगे. आई एम गोइंग टू दुबई डे आफ्टर. मैं तो घर पे, मतलब घर पे ऐसे पूजा पाठ चल रहा है घर पे कि मैं बेटा, और जहां जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पे भी पूजा पाठ चल रहा है कि भाई सलील भाई नेगेटिव आ जाए, नहीं तो हम सबको टेस्ट कराना पड़ेगा. व्हाट्स द बिगेस्ट थिंग बट यू मिस्ड एंड लर्नड इन द लॉकडाउन? आप दोनों से पूछूंगा मैं, एंड ऑफ कोर्स तुलसी, biggest thing you missed and learnt in the lockdown / sitting at home in this last 1 year? पहले तुलसी आप बता दो. One thing you really missed and one thing you learnt. मैंने तो what I'm missing the most are my concerts, all my gigs, and everyone, like, and I've done so many songs in the lockdown कि मुझे लग रहा है यार कहीं तो अभी इसको जाके, you know, performing live is a very, very important aspect for every artist. So that's what I'm missing. And सीखा तो मैंने खैर बहुत कुछ है. इस lockdown ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. I've really become independent in terms of recording myself. So I started making use of my home studio where तेरे नाल से लेकर नाम, जितने भी मैंने लॉकडाउन में गाने किए, तन्हाई भी, वो सब घर पे अपने रिकॉर्ड किए हैं अपने सिस्टम पे खुद से. तो that ways I've become very independent and I'm very happy. अब मैं वही रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे को स्टूडियो का वाइब भी नहीं चाहिए. मतलब I feel very comfortable there. This word you've used ना, vibe, ये रियल चेंज हुई है. हर कोई बोलता है ना, पहले फील नहीं आती थी जब तक मिले ना. अब लोगों ने वो फील डेवलप कर ली है दूर रह के. मैंने भी जब फर्स्ट इंटरव्यू, आई रिमेंबर व्हेन आई डिड इट, स्वरा भास्कर थी, मेरे को फील ही नहीं आ रही थी क्योंकि स्वरार में इतनी, मतलब अलग जोन रहता है. लेकिन धीरे धीरे ना आई रियलाइज कि यार हम लोग सब परफॉर्मर्स हैं और रियलिस्टिकली करना, वी कांट फेक इट, बट रियलिस्टिकली यू स्टार्टेड टू फील द वाइब विद यू गाइस. चलो एक चीज जो मिस की और जो सीखे इस पूरे लॉकडाउन में क्या है वो, एंड नॉन म्यूजिक रिलेटेड, म्यूजिक रिलेटेड नहीं बोल सकते, नॉन म्यूजिक रिलेटेड. तो बोला ना अभी म्यूजिक वाला भी कॉन्सर्ट तो मिस करते. हाँ, मैंने जो सीखा है पता है क्या है, मैंने कि आप कैसे वेट बढ़ाते हो और कैसे आप घटाते हो. मैंने भी वेट लूज किया है लॉकडाउन में, तो मैंने भी वर्क ऑन माय सेल्फ. हमने पहले बढ़ाया है और फिर लूज किया है. और तुम्हारा भी सेम है क्या? तुम्हें भी सिर्फ वेट पर अटके हो तुम भी परंपरा, या कुछ और सीखा है तुमने? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, वेट का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ में, ये मुझे अभी पता लगा है. क्योंकि मेरा वेट कितना 8-9 kgs मेरा बढ़ा. हाँ, 9 kgs, मतलब इतना. अभी मैंने रिड्यूस किया है वापस से. बाल काट लिए ना आपने बाल काट लिए तो पत्ते लगे. शरीर भी काट लिया है. बालों के 2 किलो बाल भी काटा, शरीर भी काट लिया. बट इट्स ग्रेट. चलो जाने से पहले तुलसी, सम टिप्स या व्हाट हैव यू बीन डूइंग, खाना पीना, एंड नॉट जस्ट दैट, मतलब पता क्या है, इट्स द लाइनिंग जो स्टमक में आनी शुरू हो जाती है ना, दैट इज व्हेन यू डन इट. लोग बैठे फ्लैट स्टमक नहीं है. मैंने ये डेफिनेटली किया है. I've changed my eating pattern, but I'm a huge foodie, so I have to eat my food. All I've given up is on meetha, and something that I've done very religiously in the lockdown is running and following वो जो अपना videos देख के, there are apps ना, the fitness app, वो videos देख के those 40-minute videos मैंने वो religiously किया है lockdown में, because I had nothing else to do. It was my music and then running in the evening or doing one of these classes. So I've been very
and giving up one chocolate. हाँ ठीक है, वो ये तीनों फिक्स है। सचेत सुन लिया, ये तीनों चीजें करनी है। हाँ इतना आलस वाला है कि दौड़ रहा हूं मैं, अब वेट कैसे कम करें, क्योंकि हमें मन नहीं करता हम एटलीस्ट कुछ भी करें शरीर के लिए। You know, can you imagine? I shout at him, "Hey, look at yourself there. You do this stomach exercise. The way he does this. What are you doing? इसमें भी आलस." आलस लेकिन गाने में बिल्कुल नहीं है, फुल पावर गाइस। तन्हाई इज रॉकिंग, थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल सून। मुझे वो वाली रियल वाइब भी चाहिए। ये ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन तब तक के लिए आई विल बी वेटिंग गाइस। थैंक यू सो मच। Thank you. बाय बाय। That was Tanhaai and the super fun trio. And like I said, I'm very jealous of Tulsi right now. She's really lost a lot of weight. So along with the music, of course, we've given you a full recipe and diet plan, man, for this. So I'll catch you again soon on this episode of Star Stop. Remember, B4U Entertainment is where you can go check out all the videos online. Every Friday we come out with a video. And just wait for that. Actually, just go to the like and subscribe button. So once you do the like and the notifications, I also get it in my phone. You'll also get it. Take care.